Yes, guys, in English, we have three types of continuous tenses. We have a present continuous, past continuous, and future continuous tense. In present continuous tense, we use HMR actioning. In past continuous tense, we use was were actioning. In future continuous tense, we use will be actioning. Present continuous tense gives us the sense of present sense of time, and it tells about that action that is going on right now at this moment. क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ. Now I am speaking. मैं पढ़ा रहा हूँ. I am teaching right now. Means what is going on at this time right now. What is going on? What is the action which is going on at this moment? This is the present continuous tense. We always use actioning form of verb. इसको present participle भी बोलते हैं और इसको fourth form of verb भी बोलते हैं बच्चे. Playing, going, reading, writing, watching, listening, talking, jumping, dancing, ये जितनी भी ing वाली verb हैं ये continuous tense के लिए बनी है बच्चा. HMR we use it if the subject is third person singular, noun or pronoun. We use R if subject is I, if subject is you, we, they, and plural. We use M with I. I'm actioning. They are actioning. He is actioning. She is actioning. Ram is actioning. It is raining outside. It is raining heavily outside. So ये आपका ऐसा एक्शन है जो अब चल रहा है. अगर इसी एक्शन को आप पास्ट में बोलेंगे, अगर इसी एक्शन के बारे में आप पास्ट में बातें करें, हो रहा था, सब्जेक्ट कर रहा था, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मेरी मम्मी सो रही थी, माई मदर वॉज स्लीपिंग, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, हम पढ़ रहे थे, वी वर लर्निंग, वी वर लिसनिंग, वी वर डूइंग द होमवर्क, वी वर वॉचिंग टीवी. तो HMR प्लस एक्शनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर प्लस एक्शनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और उसके बाद आता है 3 नंबर पे फ्यूचर सेंस ऑफ टाइम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम यूज करते हैं विल बी प्लस एक्शनिंग. यस गाइस, विल बी एक्शनिंग सेंटेंस में भी पॉजिटिव, सेंटेंस में भी नेगेटिव, सेंटेंस में भी इंटरोगेटिव. वी ऑलवेज यूज विल बी एक्शनिंग इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. बच्चे मम्मी को मम्मी बोलना है, आंटी नहीं बोलना है, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे. पापा को पापा बोला जाता है, भाई नहीं बोला जाता, या उनको अंकल नहीं बोला जाता. वैसे ही HMR प्लस एक्शनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अलावा किसी भी टेंस में यूज नहीं होती. उसको अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही बोलना है. We use was were actioning only in the past continuous tense. Was were plus actioning combination past continuous tense के अलावा किसी भी टेंस में यूज नहीं होता. किसी भी कंट्री में कोई भी यूज नहीं करता was were actioning को past continuous tense के अलावा. Will be actioning sentence में भी negative, sentence में भी positive, sentence में भी interrogative is only for future continuous tense guys. तो सभी लोग loudly चिल्ला के बताओ, मुझे आवाज देके दिखाएं कि सर समझ में आ गया. We don't have any doubt. Yes, please tell me. So we don't have any doubt. अरे बोलो. Sir, no doubt. Yes बच्चे. तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, yes please म्यूट हो जाए. थैंक यू. अगर अभी भी कोई डाउट हो आपको, आप मुझे पर्सनल 1-to-1 क्लास के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं. एक्स्ट्रा क्लास की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती. आप लोग आराम से मुझे बताएं, क्लास में आए, सीखें, अपने आप को सीखने का चांस दे बच्चे. थैंक यू सो मच जो आपने मुझे पढ़ाने का चांस दिया है. ओके, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी ऑन द टाइम इन द क्लासेस. नाउ रेडी फॉर द क्विज. कौन कौन रेडी है क्विज के लिए? Sir, me.